Assalamu alaikum everyone, my name is Roheena and I'm from BS Biotechnology and my student ID is 008. And today the topic of my presentation is Americium. Americium is an element that is placed in F block, and it is a transition element. It is a highly radioactive element. So let's talk about its let's talk about its general introduction. Americium is pronounced as Americium, not Americium. Its actual pronunciation is Americium. It has a silvery white appearance and has an atomic number of 243. It has an atomic mass of 95. It belongs to period 7 and it is an F block element. Its electronic configuration is shown below, as you can see. Now this is the actual appearance of Americium. It has shiny silvery appearance, as you can see. Now let's talk about the discovery of Americium. Americium was first produced in 1944 by the group of Jalen T.C. Borg from Berkeley, California at the Metallurgical Laboratory of the University of Chicago as a part of Manhattan Project. As you can study कि Americium जो 1944 में firstly produce हुआ था by some scientists और इसकी डिस्कवरी को until 1945 एज अ सीक्रेट रखा गया क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट था. और मज़े की बात यह है कि अमेरिसियम इसका नाम इसको इस वजह से दिया गया क्योंकि इसको अमेरिका में डिस्कवर किया गया था. और बेसिकली हमें अमेरिकम जो है ना, यूरेनियम और प्लूटोनियम के जो हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस करवाते हैं उनके नतीजे में जो थोड़ी अमाउंट पे प्रोड्यूस भी होता है. This is the chemical structure of americium. This is how americium chemically looks like. These are the bonds, and this is the Am241, a radioactive isotope of americium. Now let's talk about the physical properties of americium. At standard temperature and pressure, americium is solid. मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे americium एक सॉलिड मटेरियल है, ना तो ये लिक्विड है ना तो ये गैस है. रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है. इसका मेल्टिंग पॉइंट 1449 केल्विन है एंड दीज आर ऑल एट रूम टेम्परेचर. और in Celsius 1176 and in Fahrenheit 2149. It is a boiling point of 2880 Kelvin, density of 12 gram per centimeter cube, has a heat of UN of 14.39, which is approximately 15 kilojoule per mole. It has a molar heat capacity of 28 and vapor pressure as defined below. Now let's talk about some chemical properties of americium. It has the lowest oxidation state +2 and the highest oxidation state +7. Electronegativity of 1.3. It is not that much electronegative and has an ionization energy of 578 kilojoule per mole. What is ionization energy? Ionization energy basically is the energy that is used to remove an electron from the outermost shell of a gaseous atom. Outermost shell of an atom in the gaseous or ionized form. इसका एटॉमिक रेडियस 173 पिकोमीटर है और कोवलेंट रेडियस 180 पिकोमीटर. अब हम बात करेंगे कि हाउ americium is extracted from its ores. Americium has been produced in small quantities in nuclear reactors for decades. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एज अ रिजल्ट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम रिएक्शन स्मॉल अमाउंट में हमारे पास americium भी प्रोड्यूस होता है. और इसकी जो ज़्यादा हमें ज़खायर मिलते हैं वो इसके आइसोटोप्स की फॉर्म में मिलते हैं. And nevertheless, since it was first offered for sale in 1962 में इसकी पहली सेल जनरेट हुई थी और इसकी प्राइस हाईली कॉस्टली मटेरियल है. जब 1962 में फर्स्टली इसको बेचा गया तब इसकी प्राइस $1500 थी पर ग्राम. कैन यू इमेजिन? और आज भी इसकी प्राइस नीचे नहीं हो सकी बिकॉज इट इज़ अ हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ये कम अमाउंट पे मिलता है और ये हाईली कॉस्टली है. Most synthesis routines yield a mixture of different actinide isotopes in oxide forms, from which isotopes of americium can be separated. कुछ ऑक्साइड्स भी होते हैं एक्टिनाइड सीरीज़ के. ये एक एक्टिनाइड एलिमेंट है. लेंथनाइड सीरीज़ के नीचे एक एक्टिनाइड सीरीज़ है, वहाँ पे मौजूद एलिमेंट है americium और इसके हम ऑक्साइड से इसको भी सेपरेट कर सकते हैं. Now we are discussing the applications of americium. Although americium is a highly highly radioactive element, yet it has very useful usages and applications.
First, ionization type smoke detector. Americium is used in the most common type of household smoke detector which uses americium 241 जो कि americium का एक isotope है in the form of americium dioxide as its source of ionizing radiation. आयनाइजिंग टाइप स्मोक डिटेक्टर आयनाइजिंग रेडिएशन के तौर पर americium 241 जो कि americium का एक रेडिएटिव आइसोटोप है उसको यूज़ करता है. In radionuclide, as AM241 has a roughly similar half-life of plutonium. इसकी half-life roughly plutonium के equal होती है and it has been proposed as an active element of radioisotope thermoelectric generators. It is also used in thermoelectric generators क्योंकि इसके नतीजे में जब ये reactions करता है फिर reactions करता है तो इसके नतीजे में high amount of heat produce होती है जो कि thermoelectric generators को चलाने में काम आती है. For example, in spacecraft, although americium produces less heat and electricity and its radiation poses more threat to humans owing to neutron emission, the European Space Agency is considering using americium for space probes. बेसिकली साइंटिस्ट का ये मानना है कि americium हाईली रेडियो एक्टिव है तो इसके रेडिएशंस जो है वो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं तो इसको वो लोग अपने स्पेसक्राफ्ट में स्पेस प्रॉब्स में प्रेफरेबली यूज़ करना पसंद करते हैं. नाउ न्यूट्रॉन सोर्स. सबसे ज़्यादा AM41 241 का जो यूज़ है वो एज अ न्यूट्रॉन सोर्स है इन न्यूट्रॉन प्रोब. और न्यूट्रॉन प्रोब एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्वांटिटी ऑफ वाटर को मेजर करती है एज वेल एज उसकी डेंसिटी को फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन हाईवे कंस्ट्रक्शन में उसकी क्वांटिटी को और उसकी क्वांटिटी को उसके मॉइस्चर को उसकी डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम AM241 का यूज़ करते हैं. And AM2 neutron sources are also used in well logging applications as well as in neutron radiography, tomography and other radiochemical investigations. अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है. हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाईली कॉस्टली भी है, हाईली इस पे से रेडिएशंस भी इतनी एमिट होती हैं तो हम लोग इसको साइंटिस्ट इसको वो प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको स्टोर कैसे करते हैं. As a highly radioactive element, americium and its compounds must be handled only in appropriate laboratory under special arrangement, जैसे कि हमने अभी बात की. Although most americium isotopes predominantly emit alpha particles. Alpha particles are highly ionizing radiations that cause severe damages to human skin and human organs, which can be blocked by thin layers of common materials. Many of the daughter products emit gamma rays and neutrons, which have a long penetration depth. Gamma rays be highly destructive and for humans and other life species. americium के ज़ाहिर है इसके हेल्थ हैज़र्ड्स भी होंगे जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे. Exposure to extremely high levels of americium, as has been reported in some animal studies, has resulted in damage to organs such as lungs, liver, kidneys, thyroid. It is rare, however, that a person would be exposed to amounts of americium large enough to cause harmful effects in these organs. इसकी हाई रेडिएशंस को अगर हम ज़्यादा देर तक लेंगे तो americium जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है. ये हमारे लंग्स को, लिवर को, किडनीज़ को, थायराइड को हाईली अफेक्ट कर सकता है. वैसा ऐसे तो कम देखा गया है कि इसने इन ऑर्गन्स को डिफेक्ट किया हो ज़्यादातर, लेकिन ये जो है स्मॉल अमाउंट में इनको ज़रूर अफेक्ट करता है. So guys, this is all from my side. Thank you so much.